And again I would say your parents are investing lot of money. Even if they are sending you here to government college, they are investing lot of money. They want you to become something. If you are in search of something that is uglier, that is bad, suppose you are using social media, wasting whole day, you won't earn anything. Yes, you can use social media for a time being. Everybody does it. I do use social media. You should go to YouTube channels, different YouTube channels, and if a teacher is teaching chemistry topic today, physics topics today, mathematics topics today, even English topics today, so you should go your home and find out the same topic from YouTube channel. There are a lot of YouTubers, no doubt they are also earning, but they give something to the society, to the people. Our students are unfortunately unable to understand this psychology. They are joining different tuition centers, academies. Literally speaking, I will discourage joining academies. And there are a lot of students, lot of parents, those who cannot afford the fee of academies are sending their children to different academies to learn some of the subjects. Even if they don't have money, if you use social media positively, your parents will not send you to academies. But you are completely unaware about the digital marketing, how the people are earning money out of mobile, etc. But if you use digital word, you can earn money. Suppose I was teaching you about the structure. This structure, Karachi is known as City of Light. Now the answer is as. And I am just teaching you 10 to 15 error detections are the mistakes. 10 to 15. Just making 10 minutes video. 10 to 15 just making 10 minutes video on daily basis, on regular basis. And I am uploading on my channel. If you are making 10 videos, one video, 10 sentences. Now this is one sentence. When I start writing, Karachi is known as the city of lights. I know the structure, but I must verify the word will be as. It will not be a different word. It will be a city of light. And there is another sentence. Suppose there is a sentence, he is known dash me. Now this is passive. When you are supposed to use the word known into passive, you will use to or by. There are two options. One is by and other is to. So if you know the word no always takes the passive to, then you get the marks. Now this is my second sentence. And there is another sentence, he is known dash his skills. Now this is third sentence. I am making out of the word no. He is known dash his skills. The word will be far. The third sentence use with the word no. So if you know the structure, now just I am telling the three sentences. Error detection, 3 sentences. Even if you are making 3 sentences on daily basis, 3 sentences is not a big deal. This is very easy and piece of cake. But people are afraid. The students are afraid. They don't know how to teach. And similarly, when you start teaching error detection, passive, active, just use YouTube channel on daily basis, learn a few things from YouTube, do some practices and start teaching. Yesterday there was a student, he was asking me that he is investing in cryptocurrency. He is investing in trade, forex trade. So he has wasted a lot of money. He has been investing, but I would say he has been wasting over the last few years. He said to me, sir, I haven't earned a single penny out of cryptocurrency. Cryptocurrency is purely a scam. Purely a scam. You get some pocket money, you are investing. You buy something out of your family,
and you invest in cryptocurrency. It is purely scam. Crypto is not legal in Pakistan. Students, those who want to become rich, quick rich, by using the shortcut, they will be poorer. They will never become rich. So the point of discussion is simply do not find a shortcut to becoming a rich. You should be focusing on your studies. Sir Rasheed is teaching something today. I just taught you 3 error detections, 3 sentences simply. Go your home, try to find some more sentences. And tomorrow, when you are coming tomorrow, when you are getting back tomorrow, you should also come up here at the dais. Sir, I would like to teach something to the students today. Can you give me 5 minutes? I will surely give 5 minutes to all of you. Because I want you to learn something. Suppose if my son is using social media in a wonderful way, why should I waste my money sending him to academy? Everything is available on YouTube. YouTubers are teaching much more better. Suppose the sentence and is known the city of something else. It is popular for. जिस चीज़ की वजह से वो मशहूर है. Similarly, he is known dash to me. I will use you are known to them. I will just bring a slight changes into the sentence. So this is the best strategy. Students unfortunately do not understand. Suppose I am speaking. Since I enter the class, I just start speaking in English using different structures. How did I improve? Can you tell me? And similarly, you might be thinking that if Sir Rasheed can speak, we can also. You can also use the similar structures, the similar sentences. So speaking skill can be improved just by having communication. Our students unfortunately do not communicate. You should be speaking with your friends. So if your parents are sending here, they have some dreams to come true. And once you get back home, you invest your time in a proper way, your parents will appreciate you. Parents notice each and everything. You cannot befool your parents. If you think that my parents do not know, either I am wasting my time and energy or investing it. You cannot befool your parents. My children cannot befool me. If they are playing PUBG, I know they are playing it. And if they are using social media, YouTube channels for the sake of learning something, I will know it. If you smoke and you think your parents do not know, you are in fool's paradise. Your parents know each and every step taken by you, each and every activity of a son, of a daughter. Your parents know it. But if you think that no, my parents do not know, they are investing some money just to make you feel proud. Your father always tries his best to make a best version of your personality, but children do not understand it. Unfortunately, I would say. If children understand this psychology, that my father is going to make me something, I must be making him feel proud of me, then surely you will succeed. लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, उसको तो कोई पता नहीं है, वो तो पुराने दौर का बंदा है, उसको तो पता ही नहीं, हम सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं, उसको कोई पता नहीं है, तो यू आर इन फूल्स पैराडाइज. यू कैन बीट टैलेंट बट नॉट एक्सपीरियंस. टैलेंट को बीट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को बीट नहीं कर सकते. समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो आप करें. शाबाश. If you want to ask me some questions, so you should ask. Any question? हाँ, कामयाबी किसको कहा जाता है? ये सवाल है कि नौकरी लेना कामयाबी नहीं है. इंसान को
सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल? फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए। वो कैसे मिलेगा? पैसों से मिलेगा। पैसे कैसे आएंगे? कमाने से आएंगे। कमाया कैसे जाता है? आप कैसे कमा सकते हैं? बिजनेस हो या नौकरी हो ना, कैसे कमा सकते हैं? बिजनेस कैसे करेंगे आप? पैसा होगा ना। आपके पास पैसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, आप जीरो हो। आप जीरो हो। एक दो बचे हैं, एक के पास बहुत ज्यादा पैसा है, एक के पास कुछ नहीं है, जीरो है। तो दोनों से आप पूछेंगे कि जिसके पास पैसा है ना, वो कहेगा पैसा थोड़ी कामयाबी है, क्योंकि उसके पास है। तुझे ही घर में आने वञे ना, घर मानी न मिले, तू चवंदे कामयाबी पैसो आ, नौकरी हुजे। ये ऐसा है। वर्थ ऑफ वाटर इज नोन व्हेन द वेल इज ड्राई। वर्थ ऑफ वाटर इज नोन व्हेन द वेल इज ड्राई। जो भूखा इंसान होता है ना, उसको चांद भी रोटी नजर आती है। पूरा चांद है तो फुल रोटी, आधा चांद है तो आधी रोटी, क्योंकि वो भूखा है, उसके पास कुछ नहीं है। और जिसके पास कुछ है वो कहते कामयाबी कुछ भी नहीं, कामयाबी कुछ भी हुआ, क्योंकि उसके पास है। तो हमारी सोसाइटी में लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ही मर रहे हैं। पढ़ो, कामयाबी हासिल करो। पैसों के बाद कामयाबी की डेफिनेशन दूसरी है। व्हेन यू लॉट ऑफ मनी, नाउ द डेफिनेशन ऑफ कामयाबी, सक्सेस इज डिफरेंट, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ मनी। अगेन आई वुड से कि ठीक है, लेकिन पैसे कमाना एथिकली, आप लीगल मनी होनी चाहिए। लीगल मनी, इट मस्ट बी ए लीगल मनी। बाय फेयर मीन्स आप अर्न करें, यू मस्ट बी अर्निंग बाय फेयर मीन्स। और लीगल मनी में सुकून होता है, यू फील सेफ एंड सिक्योर इफ इट इज लीगल मनी। वो जितना भी आए इट्स फाइन। अगर पैसा आए तो इसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग? जिथे बाहि लगे वो हंध सड़े, सिंधी में चइबो आहे, जिथे बाहि लगे वो हंध सड़े। वियरर नोज वेयर शू पिंचेस। कबर की खबर मुर्दे को होती है। वियरर नोज वेयर शू पिंचेस। क्योंकि जापान में बच्चे को स्कूल भेजा जाता है ना, सबसे पहले मॉरलिटी और एथिक्स सिखाया जाता है। जैसे भाई ने सवाल किया ना सक्सेस के बारे में, मैं इनके साथ एग्री भी हूँगा कि इनकी बात ठीक है कि पैसा इज नॉट सक्सेस। पैसा होना ज़रूरी है, पर पैसा सक्सेस नहीं है। आई विल एग्री। अब ये नहीं है कि मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हो, आई विल डिसएग्री, नो। तो इसके लिए मोरलिटी और एथिक्स, इट स्टार्ट फ्रॉम होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से स्टार्ट होगा। आप, मैं, सब जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हो। पुलिस का ये रवैया, मैं भी हूँ, हम सारे स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि हमारी भी हमसे ही पुलिस वाला बनेगा ना, इधर से बनेगा ना, कोई मार्स जुपिटर से तो नहीं आएगा ना, इधर से ही आएगा ना। ये सारे पुलिस वाले जो हैं, ये 50 साल के बाद सब रिटायर होंगे, फिर पुलिस वाला कहाँ से बनेगा? इधर से बनेगा। तो ईच वन टीच वन। जब यहाँ स्कूल कॉलेजेस में जीरो से इथिक्स और मोरलिटी सिखाई जाएगी ना, आई रिपीट, गुड और बैड का फर्क सिखाया जाएगा, करप्शन और लीगल मनी का फर्क सिखाया जाएगा, चेंज विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी डे। जब ये सिखाया जाए कि यहां थूकना ठीक नहीं है, घर के बाहर कचरा फेंकना ठीक नहीं है, गाली देना ठीक नहीं है, उस्ताद की इज्जत करना ठीक है, पुलिस वाले की इज्जत करना ठीक है, बजाय के कहो मेरे अब्बू तो डीएसपी हैं, तू मुझे रोक रहा है, ये बदतमीजी है। कानून, लॉ इज फॉर ऑल। तो हाँ, तो इट स्टार्ट फ्रॉम यू, इट स्टार्ट फ्रॉम मी, इट स्टार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो इसलिए मैं कहूँगा, इस पे दोबारा बात करेंगे। तो हमेशा कहते हैं कि अपनी गिरबान में झांको। पहले मैं देखूंगा कि मैं करप्ट हूँ, ठीक है ना।